Hi, good morning all. Just joining everyone. Good morning, sir. Good morning, Manojji. Good morning, sir. Good morning, everyone. I think it was Ajay. Hmm. Okay, so let's start. In meantime, others are joining. Okay, so last week, yes, we did saw a good rally. So this have been crossed. Okay, and we saw daily all-time high close with bullish candle, though 8 bar bearish divergence setup, which never confirmed. Weekly bullish candle, which did the trick. Monthly bullish candle above previous month's doji high. So that went above the doji high as well with no inbuilt bearishness still in Nifty. Okay, we will see what is current status. We are already, I think, yesterday once I saw almost 17,400 ISO on SGX. Okay, I don't know how much to trust it, but you can still see it rising. Okay, so that's still looking good. Yes, we saw this about 36,600 now, and it took support there. I think on Thursday when it had a fall, and even yesterday when it fall, it took support at 36,600 and it bounced from there. So it's also looking now good because we had the final resistance at 37,250, and that is where it actually made at the high. So yet the last gap is where Bank Nifty is getting resisted. Okay, IT continues to make new highs, so there is nothing yet, and there is no bearishness yet seen in any of the IT stocks as well. But yeah, one thing which I saw, and TCS has given one signal, so it needs confirmation again. Okay, so that's why we'll have to see the trade on TCS as well. It's a doji yesterday, so if the doji low breaks, we can short it. FMCG looks more powerful. It's just growing. Nifty Auto showed some sign of recovery in last week, so that is also doing almost some good because it had a 40 support on weekly. And Nifty Pharma, they have done a turnaround. Okay, so we saw pharma moving up. So almost all the sectors are firing. So we'll have to see now this week what happens. Okay, so just before we start, I would just recommend one thing. If you can, comment on YouTube, share with your family friends. Okay, because if this is really helping you guys to trade better, okay, you can ask them to at least view the video and learn, and from that and do it the trades in the right way rather than just trading blindly. Because recently I heard of I think Saraf sir only told me of one of his daughter's office mate. He lost almost a big amount of money. I don't know what he was saying, was around 75 to 80 lakhs. I don't know what he was saying, but in options, he lost in a single day. So if someone is losing like this, at least you can help them to at least see the video. Even I think this analysis videos would be helping them to understand, the levels on the indices. At least, they will not falter in a big way. Okay, so that would be just one thing which you can do. Yeah, so Saraf is there on this. Okay, he's already there. Okay, he said yes. Okay, so that is where I would just recommend. Okay, so let's start now for 6th of September. So normally September is seen as a highly trended month. This time seems the trend is on the upside, but we'll have to see, whether how it goes. So far, it looks good. August 6th, so give it a September level. So let's start with Nifty. So this is where Nifty daily is bandwalk with no bearishness. See, we earlier had a 8 bar bearish divergence here, but now that has been gone. So now it is ruled out. Okay.
weekly bandwalk, no bearishness, and monthly it is now approaching this. So किसी ने डाला ना, it will be adult soon. Maybe it will be adult soon. We don't know. Okay, my earlier target was around 17,500 and we are approaching that. Okay, because तभी upper band was around 17,500 or 17,440 का कुछ target दिया था मैंने. So we are already approaching that, and now even the band has moved higher. Okay, if you look at it, RSI on monthly still has got some steam left. Okay, you can hope for another 2 points gain on RSI, which means still around 400 500 points are still remaining on this upside move. So maybe we might see some movement on upside till mid of September, and then might be some consolidation, because remember one thing, this is almost a 90-degree trend line, and a 90-degree trend line never means reversal. Okay, it will be a consolidation and then it might take a turn. Okay, so I would just wait for any bearish signal. Still there is nothing on any of the time frame, and it really looks good to me. I think we are already long on top bottom in Nifty as well since 17,200. So I think we had it long since 16,600, and it is not been down from that. So it's looking still better. 17,329. Okay, daily all-time high close with bullish candle. Okay, and band walk. So it's doing band walk, weekly bullish candle, and band walk started. Monthly bullish candle above this, everything, no inbuilt and diamond index. Now main thing comes about is a resistance. So now 17,560 is one of the level. Okay. अभी जो लेवल्स इसमें क्या देंगे वो भी नहीं पता, मुझे कभी भी उसको टेस्ट नहीं किया गया है. So this is the round number, final round number which you can then think of. Okay, now support is also change. ये पूरा चला जाएगा. Okay, I think पूरा तो नहीं जाएगा. So now 17,100 is going to act as support. First level of support is that. Then 16,800 जहाँ पे बीच में भी support लिया था. So this is where we are now with Nifty. Okay, let's see BankNifty now. BankNifty ने तो कल जो गुगली मारा ना उससे हम लोग बचे थे. I was looking for weekly BankNifty to make अगर वो कल 700 के नीचे स्पॉट बंद आता था ना, स्पॉट भी मेरे ख्याल से 700 के ऊपर में बंद आया है. अगर ये 700 के नीचे बंद आता था तो it would have given a weekly 4 bar bearish divergence. Okay, but जो लास्ट में भागा है, I think it's good one. It is 900 पे close दिया है, and now it's a doji at you can say upper band resistance, but it is, see, this is where this ये वाला ये जो एक गैप है ना, उधर ही वो आया था कल, और उधर से ही नीचे आया. वो 240 के आसपास में है ये वाला ऊपर वाला. Okay, so this is where it is. So once this is now crossed, you will definitely see this touched, and I think it फिर 37,700 तक जा ही रहा है, तो 38,000 भी एक बार मार ही देगा. Okay, and it's looking good. See, this weekly candle is much more powerful than the previous time when it closed it, and it is with volumes, and it is a breakout over this. So now with 36,400 as a stop loss, you can hold BankNifty. Okay, and see this. ये 6191 है, ये 6253 है. और let us see even in स्पॉट में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि स्पॉट में कल आ रहा था 6244 के ऊपर में. अगर ये वीक क्लोज हुआ है, then there is no bearish divergence. Okay, and this also looks good to me so far.
Okay, so there is a good breakout on monthly. Okay, so यहाँ पे 36,000 का support है और यहाँ पे भी 36,500 पे gap है. So there is, some support here as well. Weekly looks good. Daily looks good. Okay, it's a doji. So once the doji's high is crossed, you might see, still up move, and it actually respected this gap. Okay, तो ये गैप को एक बार रिस्पेक्ट दिया है. अभी हो गया रिस्पेक्ट, बस हो गया. टेरिपोना हो गया, अभी चलो बाय बाय. Okay, so see this shooting stars high and this gap here. Two things. So that was one of the reason to bring it down yesterday. Now, if it continues to grow, it will break above this. Even Bank Nifty will do bandwalk and it's a squeeze breakout then. So you might see some movement even in this. Okay. So let us have a write up first. फिर मैं एक बार खाली spot में देखना चाहूँगा because we'll move to spot anyways for the other indices as well. So 36,900 ही डालता हूँ, 899 डालो, 900 डालो. Okay, TriStar Doji did the trick and it just had a blast. Okay, so now what we have is daily Doji at price resistance. Okay, and go back. Okay, weekly above 60 and breakout. Okay, monthly bullish candle at 60 support. Okay, now this will change. Now we need 37 to 50, then 37, 770, 700, and then Sudha 38,000. Okay, this is where you will see BankNifty as well. और support किधर है भाई? Support के भी levels check हो जाएंगे. 36,500, 36,100, and 35,800. Okay, so these are going to be the levels of support. Okay, so now let's see on the spot क्या दिखाता है. एक बार spot पे भी इसी को देखेंगे. 761. So now there is no direction. See, the thing is this. I was looking for this. ये देखो 6244 है और कल 2:30 बजे 2:30 बजे ये 62.12 62.27 था. ओके, और ये 36,200 के नीचे है. उतना तो नीचे गिरने वाला भी नहीं था वो. So that's why I was worried कि ये weekly bearish divergence ना बना दे जो पहले भी इधर और इधर बना के एक वीक नीचे आया था. Okay, so that was what my concern was, and now there is no bearishness. Okay, so it looks very good. Okay, let me zoom it. I think zoom करने के लिए, but then it will be very, very different. I know. एक minute. थोड़ा expand करता हूँ so that you can see it more clearly. Is it now okay, Gordon? Yes, sir. Okay. Thank you very much. So this now looks good. Okay. Now let's go to IT. IT. आहा, ये बैंड वॉक चालू हो जाए बैंक निफ्टी में, मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर. ऐसे ही सपने हम देखते रहते हैं. देखो वीकली बैंड वॉक है ये. This is a weekly band walk, and there was a PRD setup over here as well, and then we saw TCS PRD going through as well, and now there is a 4-bar bearish divergence even in IT. Okay, so there is a bearish divergence here, so we now need to see
what it does here. Okay, so we do have, a 4-bar bearish divergence on IT at all-time high. Okay, it's still band walk. So weekly is still positive and no bearishness. So there can be just retracement expected in IT. डेली का डाइवर्जेंस देख के बड़ा कॉल मत लो, वो छोटा छोटा रहेगा. सो इफ यू आर होल्डिंग स्टॉक्स ऑफ आईटी इन योर पोर्टफोलियो, नो नीड टू सेल देम ऑफ. ओके, बट देयर कैन बी सम रिट्रेसमेंट ऑन डेली विच इज फाइन. ओके, होना भी चाहिए. ये एक साइडेड इतना गया है, रॉकेट गया है ये तो सीधा. ओके, सो इट विल बी समवेयर लाइक दैट. So daily might have something, but it is at gap support, and your daily का confirm आता है इसके नीचे. So 34,300 के नीचे ही ये होगा, confirm होगा. So bearish divergence का confirmation को भी time है. Okay, so we'll have to see because it's almost 500 points from here. Okay, उतने में तो stock retrace हो गया, वापस भी भाग जाएगा. So 34,891. So let's write down. मैं डर गया, 34,891 तो ये नीचे आ गया, ऐसे नहीं, ये ऊपर है. So more 500 points is a jump. So really looking good. Daily breakout 4 बार. अरे ये तो तभी भी था. क्या बात है बबुआ, तुम कुछ भी करते हो और ऊपर ही भागते हो. मतलब ये कंफर्मेशन नहीं होता है. टनिक हम इधर डाल देते हैं, कंफर्म हुआ किधर होता. below 34,350. Okay. Weekly bullish candle and bandwalk, monthly is bullish candle and bandwalk. जाने दो, ये तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है. Okay, so it's looking really good. IT index, and so are IT stocks. Okay, so let's see now if there is any entry into that. Now let's go to the other sector. Okay. So let's see reality also. Reality is again got choked at the previous all-time high. Okay, so we need a bounce above this now. Weekly as a breakout. Oh, so once it is above 423, I think this will now give you a breakout, but we need to wait because it's also outside inside all the bearish divergence bhi hai isme. Okay, so we'll have to just have a watch on reality sector, but it's looking almost good out here. Okay, we'll have to see how it comes out. थोड़ा DLF वगैरह देख लेंगे before we get out of this. So we need a breakout about this. वही 430 के ऊपर में. So this is where it is getting stopped. Okay. See, this is the main culprit. Then there is a breakout here. फिर ये यहाँ पे first time CIP के लिए अभी आ रहा है ये. CIP on the resistance after this breakdown. Okay, लेकिन यहाँ से bounce back है. See, this is where it is broken. तो यहाँ पे CIP ले चुका है ये. तो ये zone में ये रहेगा जब तक there is no further movement. So either it will consolidate in this or it will break out. We have to now wait and watch for it. Okay. So this is where we should be looking forward to. So let's see. Reality sector looks okay. We need some breakout above 430. Then infra देख लेते हैं. और न्यू ऑल टाइम हाई जाते जा रहा है. ये देखो हैमर के बाद ऊपर पीआरडी था, पीआरडी को कंफर्म करके ऊपर. So it's working so far so good. Markets are making higher top, higher bottoms. And this is a beautiful bandwalk. So we saw ACC, Ultra Cam, I think they all were firing last week. Okay, it went good. Somewhere last Monday we missed many trades because I was not in office. There was a family function which I had to attend. So we were actually in a housewarming party of one of my close relation. So
We missed those trades and then we missed them in almost entire week, and finally yesterday we catch hold of Maruti. Well, looks good. Okay, let's see now. FMCG has got one black tick. That is the black tick showing? Nothing, 81, 83. If people are not talking, can you go on mute? I think that should be fine. Okay. So now this is also looking good at all-time high 40,000. मतलब बैंक निफ्टी कब जाएगा इतना? This is beautiful. See, no bearishness हाँ अभी भी यहाँ पे भी कोई bearish signals नहीं है. इसके लिए ज़्यादा short करने का टेंशन मत लो. खाली इंट्राडे खेलना है तो खेलो, बाकी शॉर्ट करके मत बैठना, नहीं तो ये मार्केट खा जाएगा. सी यहाँ पे भी कोई बेरिशनेस नहीं है. ये 80 है तो ये 83 है. कौन सा बेरिशनेस? कुछ है ही नहीं. सो स्टिल लुकिंग गुड. ओके, स्टिल लुकिंग वंडरफुल एंड स्टिल ब्यूटीफुल. सो इवन दिस इज लुकिंग गुड एट 40,200 आल्सो. ये देखो, ये तो सीधा कितना जंप मारा देखो. Now there is no bearishness. Okay, so daily bandwalk and bullish candles. Daily bandwalk, daily bullish candle, and bandwalk. Okay. अरे दो बार bandwalk लिखा बेटा तो ना. Okay. Weekly doji नहीं, weekly नहीं, daily थोड़ा small candle है. Sorry, small candle. ये actually small. Okay, weekly was bandwalk. Bandwalk start किया मेरे ख्याल से, right? Weekly हाँ, अरे बाकी तो बड़ी रहती मोटी candle. मतलब भूज खलीफा इंडिया में बनवा मुझसे. I think now people will visit India. They don't need to visit Dubai now. So Dubai has been remade in India. Monthly band of starting diamond index. So this is also diamond. 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond. तू कब होगा रे diamond? जल्दी हो जा बेटा. By the way, someone asked when you can enter into Bank Nifty. See, Bank Nifty is a buy about 37,250. Okay, so if the future goes about 37,250, you can enter into it. Okay, so top bottom में entry मिलेगा नहीं मिलेगा, we'll have to see. Okay, I think yesterday अगर नीचे बंद आया है तो मैं 0.5% लगा दूंगा. Okay, but let's see whether we have that A made in top bottom के लिए. Okay. So Nifty auto, let's now see. I think pharma पहले आएगा. फार्मा भी देखो, थोड़ा भी जान में जान आया इसको भी. Oh, weekly is breaking 60. हाँ, अलर्ट हुआ ऑन वीकली. मतलब जहां से गिरा था उधर तक आने को इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगता है. 1000 पॉइंट के ऊपर गिरा था ये, 1200-1300 पॉइंट गिरा था. अभी वापस देखो. Daily at 60 resistance and a doji at 60 and as well as gap. So we have few sector to short as well. And जब तक फार्मा शॉर्ट में आएगा ना, बैंक निफ्टी भागेगा. That is what I like in pharma and bank nifty. So let's see that. नेहा कक्कर का भाई आया अभी. ये 4485. अरे क्या हो रहा है भाई? 4485.
Okay, so that is where we have closed. Now daily bounce from CIP and now above 40, but now daily bounced from 40 and at 60 resistance. Okay, एक मिनट क्या है वो, and doji at 60 resistance. Okay, weekly alert bar. Okay, monthly bearish engulfing, but now shows bearish engulfing भी नहीं बना रहे. तो लास्ट वीक है जब, मतलब 2 दिन में काफी खींच लिया पहला. ये देखो, ये मस्त मस्त बन रहा था, अभी ये हैमर बना दिया है इसने. सो लास्ट 2 दिन में काफी खींचा, मतलब इट्स गुड. So it took support on CIP. Yeah, that means so pharma is also looking good. Only daily is little weak. So doji का हाई क्रॉस किया तो बाय करेंगे, क्योंकि ये इसने भी एक बार इज्जत दी है इसको, गैप डाउन को. See, there is a gap resistance. So we now need to see if the gap closes and it moves above. It's a daily basis. तो मंडे को ही पता चल जाएगा. वीकली में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मंथली में भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है. तो let's see, it might fire. So we have to see even the stocks now. Now Dr. Reddy तो already जा ही रहा है. Okay. So now monthly bearish engulfing तो बना नहीं, बेचा बनते बनते रह गए. मंथली हैमर बनाया उसने, हैमर एट CIP. Okay, let's go to now the final sector, the auto sector, which is struggling due to the chip shortage. Oh, it has also bounced. So it's a good. See, there was a bullish divergence here. It bounced from there, and it ideally should come till here, upper band. So मेरे ख्याल से 195 तक तो आया 300 का. यहाँ पे भी bull sash है, but at resistance. So we have to see now if it crosses the high. Okay, so Maruti we will have to see again, and this is maybe a bearish range shift. So we'll have to see if it crosses the high of doji, no bearishness then. Okay, so we'll have to see that. So let's understand now where we are. Okay, so 10, 124, 10, 24. Okay, so that is where we are. Daily bullish divergence set up, followed by doji. Now we are approaching 60. So daily approaching 60 resistance and above 20. Okay, weekly bearish candle at 440 support, and now we have weekly bull sash. Above sash, but M20 resistance. Monthly bearish candle below 60. Now maybe below 60, and monthly is doji below 60. Okay. So now let's see stocks. आज पहला स्टॉक मैं मेरा दिल से देखूंगा. एक ना पहले DLF देख लेते हैं, मैं इधर से खरीदने के पहले. So DLF is looking good. Okay, and I think it can be a buy about 360. Okay, so it's looking good. Buy about 360 with this candle low 320 as a stop loss. Okay, and the first target will be 400, and above 400 it will be 450, and then probably 520, this level. This is looking good. Be real estate now should trigger.
Okay, 154 पे, I think 164 पे buy है ये. Okay, so we have to wait for this down to trigger, but look at this. First bullish range shift, and now it should trigger. Okay, so if it triggers, it gets you to 266 first target, and then maybe 325. So this is looking good. Yes, अब देखो, if you are in an equity stock, only look at monthly chart. So this is also looking good. So let's see. Okay. ये तो टाइम नहीं हुआ, अभी जस्ट जन्मा है क्या? आजकल मोतीलाल बहुत बोलता है. इसमें क्या ट्रेड करेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड. I think DLF and IB real estate are enough. Okay, folks. Let's go to first. Today I see my favorite. Heat has done good. Okay, so this is where we are with respect to daily breakout. One thing, weekly breakout. Second thing, new all-time high close on month. Third thing. Now, one thing which I recommend everyone to buy now, this in equity and forget it for some months, is this. So now after a consolidation, I think it has started a move again, and this is the target. Target देखने का जरूरत नहीं है. Okay, नजर नहीं जाएगी उधर तक target है. Okay, but it's a good target of almost you are thinking of 1200 to 1300 points. This is what it should get. Okay, I'm not giving you any target, but I'm just showing you this. Okay, और ये अभी निफ्टी को लेके जाएगा. Okay, ये मतलब see, it's the bride's best friend. Okay, now bride is about to get 18, so it should get married, and उधर तक उसको कौन लेके जाएगा? The best man. शादी के मंडप तक तो best man ही लेके जाता है. So this is the best man now. So Reliance should take now Nifty to 18,000. Okay, so this is what you can now start looking into it. It's a very good breakout. Okay, and it will now suddenly take the charge. Bandwalk started on weekly. Okay, so if you are really interested, buy this in equity and hold it. Okay, फिलहाल फ्यूचर्स में I don't see any entry because daily chart को देख के अगर आप entry लेते हो तो आपका जो stop loss है, okay, वो बहुत दूर है. Okay, so you cannot now enter into this. So you will have to wait for a retracement in it and then enter. Daily volumes are also good. Okay, that shows that people have just entered. Okay, ये exhaustion volume नहीं है क्योंकि ये engulfing नहीं है. It's not the last engulfing types. और एक मिनट में थोड़ा इसको सिकुड़ रहा हूँ because I want to see something out here. Is this? Okay, so this is where it is. Okay, so एक बार ये 270 पे 2370 पे आना चाहिए for CIP. That can be an ideal buy with a stop loss of 2344 या 2340. So 30 points नीचे का stop loss रख के you can enter in futures. So I think I will see that how the week starts. Okay, and I will let you guys know in ideas, but normally I'm not giving any buy call for now, but it is a buy surely in equity at any price. Okay, बीच में मैंने भी थोड़ा बहुत बेच दिया था because I was fearing Mukesh Ambani's health issues. Okay, it's looking good now. So let's see. Okay, so ये अभी तो नहीं है. Let's see Asian Paints. So Asian Paints also does not give you any entry right now.
ये सब इक्विटी होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स हैं, इसको अगर आपको कभी भी लेना है ना तो इसको जमा करो। सी माय रिकमेंडेशन इज इफ यू आर पुटिंग 10,000 एवरी मंथ एज SIP, I would suggest you to buy, one share of each, like TCS, Infosys, RIL, Asian Paints, okay, Hindustan Unilever, and forget that 10,000 will give far more better returns than a mutual fund. Okay, this is, you should have your own SIP rather than trusting any mutual fund to do it. Yeah, it is all. Yeah, Tark also. Tark actually मैंने वापस मेरा होल्ड किया है मैंने, तो उस दिन लोअर सर्किट लग गया तो मैंने निकाला नहीं। तो टार्क भी अच्छा ही दिख रहा है राहुल, अगर है तुम्हारे पास तो रखो, उसमें भी पैसा आएगा। That is also a equity stock. हाँ Infra. हाँ, रिलायंस इंफ्रा तो अभी ठीक है, रिलायंस इंफ्रा इज ऑल्सो लुकिंग गुड। मेरे पास मेरे आधा अभी भी रखा है, आई थिंक 101 पे मैंने आधा ही निकाला था, मेरे पास अभी भी 2,500 पड़ा है शायद। हाँ पड़ा है। नहीं, टार्क उसमें अपने कौन सा सेक्टर है वो, ओबेरॉय और इंडिया बुल्स के साथ में चलेगा ना वो भी। अच्छा, टार्क भी रियलिटी का ही है ना, उसका एक्चुअली नाम भी कुछ ऐसा ही है। मैं तो टार्क एक्चुअली फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था, बीच में गूगल किया था मैंने, मैं तो खाली चार्ट देख के लिया था। आई थिंक वो भी ध समथिंग समथिंग करके नाम है उसका, बिकॉज आई नो टार्क का भी नाम अतरंगी था, मैंने ऐसे ही देखा था एक बार। अनंतराज होटल से वो लोग एक्चुअली। आई वाज आल्सो नॉट अवेयर ऑफ द नेम। मैं तो टार्क टार्क सोच के कुछ तो ली, मतलब कब ब्रेकआउट करके लिया था, and then I realize it is yeah, you can add it more also, that is fine. So if you hold it, you can still do it. सर टिन प्लेट भी पड़ा है अभी तक। टेम्पलेट रखो सर, टेम्पलेट तो कब ब्रेकआउट, उसको कौन छोड़ेगा। ना एक बार उसमें भी वो लगा हुआ है ना। हाँ लगा हुआ है। सो नॉर्मली मैं जब भी आप लोग को स्टॉप लॉस देता हूँ या अपना हिट होता है ना, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं आधा क्वांटिटी निकालता हूँ, मैं आधा छोड़ देता हूँ फिर उसमें। दैट इज हाउ नॉर्मली आई डू इट। एंड एक चीज मैंने, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट वो पुरानी आदत है जो जाती नहीं है। मैं इक्विटी स्टॉक्स में लॉस बुक करने का नहीं सोचता हूँ। सो अगर वो लॉस वाला सीधा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं कभी उसको निकालता नहीं हूँ, बिकॉज इसके लिए टार्क मेरे पास अभी भी बचा है। क्योंकि आई डोंट नो, आई बिलीव दैट इक्विटी में तो माल पड़ा है तो कभी ना कभी अपना प्राइस एटलीस्ट आएगा। सेम ईयर। वो ऐसे ही रहता है। टीम प्लेट, आई थिंक मेटल स्टॉक्स देख लो, जब भी तक जा रहे जाने तो, मेटल में अभी भी स्टीम बचा है। So नहीं, I योर would फर्स्ट still- टारगेट इज डन, यू हैव गिवन 305। हाँ 305 का फर्स्ट टारगेट इज डन, यस। नाउ यू हैव टू वेट फॉर, अभी मेरे ख्याल से कप का सेकंड पैटर्न पे जाएगा। सो लेट्स सी, अभी इसके बाद देख लेते एक बार, पहले थोड़ा नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स मिल जाए, क्योंकि एशियन पेंट में भी मेरे को तो एंट्री नहीं दिख रहा है। Then I think निफ्टी स्टॉक्स में ये दो देखा अभी तक नहीं सी, आई थिंक यूनिलीवर। सो लेट्स स्टार्ट एफएमसीजी। अरे किधर टाइप किया ये मैंने, किधर गया है? यूनिलीवर की तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने। Unilever, yesterday I saw it as a PRD setup. Okay, see 87 and 82. So it has got a good PRD setup and it has got क्या ये 737 और ये है 75. So almost 40 rupees above the new all-time high. बाप रे, 2850 का टारगेट है. Mine is about this. Okay, so this makes sense. This is still doing bandwalk on weekly.
this is also okay. I don't think so there is any bearishness in this. So first trade we get for next week is this. Reliance I'm not giving बाबा जाने दो. ये equity में लेके बैठा हूँ मैं. I have also bought it in equity and I'm holding it. Two seven seven five था ना बेटा. कैसे गलती करता है? 2290 2790. इसका लो क्या 2765 है ना. Confirm here. Okay, then I guess let's keep that. Okay. So let me pull this up so that we don't get confused later on. So where is the first? Okay. Nestle is also looking good. I think yesterday Salah from correct Zambit. Okay, I liked it, but there is a bearish divergence here, and there is a doji after a bearish divergence. Okay, so there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bar bearish divergence, which is still looking okay, and there is a hammer here. All-time high for hammer. And this is what I like. Okay, it's a cup record on weekly. And look at the RSI also. So 18,900 was an actual buy price. It's doing a bandwalk overall. Okay, only this. So now we can buy above this. डरना मत, न्यू ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे आप लोग. इसका लॉट साइज क्या 20 है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 है या 50 है? एनीबॉडी हु ट्रेड्स? I have to just see because risk reward बैठता है कि नहीं, we'll have to see that. Risk reward तो बैठना चाहिए because this is looking good. देवेन भाई को मालूम होता है. देवेन भाई is there, right? देवेन भाई, what is the lot size? Any idea? $50 है. 50 है. ठीक है, तो कितना रिस्क है वो देखना है मेरे को. ठीक है, 10,000 के आसपास का रिस्क, which is fair enough, because उसके सामने अपना टारगेट बढ़ा. राहुल ये किधर है? आया कि नहीं आया अब तक? बांधते का कुछ मैसेज नहीं है कि नहीं है इधर? राजेश हाँ इधर ही है. आ गया. अच्छा आ गया. कब पे आ गया? तो 22,000 तक जा सकता है. बाप रे बाप. ठीक है, इतना बड़ा टारगेट तो नहीं देंगे. अनरियलिस्टिक दिखता है ये भी. It's looking like a good breakout on this. So something till 2,800 you can still have. So it is looking good as a breakout. Even Britannia is doing good. Huh? Suddenly, I think FMCG ने तो पूरा एकदम छा गया है सर. I would prefer not to give much of the trade in the same sector. So this again is a sweet lead. My about is 2350, right? क्या था इसका हाई क्या है? 2372 है ना. ये क्या है? ये हाई क्या है? अरे बस हो गया. 350 is okay. शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर. See, the shooting star is with good volumes. हाँ, अगर ये इसका वॉल्यूम क्रॉस करता है तो इट्स अ मोमेंटम ट्रेड ऑन द अपसाइड. इट रियली लुक्स गुड. सो नेस्ले एक्चुअली बोथ साइड ए ट्रेड है. ओके, डोजी का लो टूटा तो शॉर्ट भी है क्योंकि देन द बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म्स एंड देन इट कैन कम डाउन टिल ऑलमोस्ट दिस लेवल.
So my about is it is 2850, so it's around 500 points. So is 2000, 20,000. And let's also have Nestle on the downside. Because there is also inbuilt bearishness in daily और किधर नहीं है, वीकली पे नहीं है, और थोड़ा अपने को एफएमसीजी सेक्टर में भी 4 बार बेरिश डाइवर्जेंस दिखा है. सेल अबाउ क्या होता है, बिलो रहेगा ना बेटा, तो क्या है इंग्लिश लिखा है आज, बिलो क्या है 20,120, so 0 0.5 कंफर्म होने दो उसको. इसका रसल रहेगा, बाई किधर है 20. So this is where Nestle will be. So we'll see as per the charts and we'll do it. Okay. Let's see. Britannia, Marie Gold. सब ब्रेकआउट है, सब पे कब ब्रेकआउट, सब में देखो ये फ्री ट्रेड है, ये एक्चुअली ये कभी भी सच नहीं हो सकता है, ये फ्री ट्रेड है, जानबूझ के मारा हुआ ट्रेड है. So this is also looking as a good breakout, Britannia. इस पे भी वही सिग्नल्स है और वही चीज है. This volume is also good. So FMCG still has steam left. We'll have to see what it does. But see, there is no bearishness even in Britannia. ये 80 है, ये 81 है. तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ तक था वो, यहाँ पे आके पूरा नलिफाई कर दिया उसने. So it's actually looking good. And Dabur is looking good to be bought. It is a hammer at upper band and bandwalk on daily. So the equities can be bought. It's looking really good. Look at the movement. Bandwalk on monthly. Okay. Let's go to Maruti. मारुति बेटे ने कल क्या किया वो देखो, वो भाई साहब कहाँ अटका देखो. ये देखो, ये गैप का क्यों मतलब है और क्यों वो काम का है. See, this is again a gap resistance. Okay, so this is where it got resisted and it still is about 20 MA. So there is still steam left in this. Okay, it is a tri-star doji here. See, a tri-star doji ka pattern hai. Okay, 3 dojis in a row. So that was the main reason why I gave you the trade yesterday. Okay, it was a tri-star doji और मैंने इसके जानबूझ के एंट्री भी पहले 30 रुपए पहले कर दिया. Okay, मैं इसका राह भी नहीं देगा कि वो doji का high cross करे. Not needed. Okay, because this pattern itself is good and it was a first bullish range shift. Okay, so it's looking really good to me. I think ये धोखा दिया खाली उसने top bottom वालों को, but ये वापस जाएगा and this can be the target. 7150 तक का टारगेट मारुति में बन सकता है. So even weekly it bounced from 40 and weekly resistance, yes, there is some. Monthly also it now shows some strength. Okay. ये immediately buy हो रहा है actually, so थोड़ा ट्रेड देने के मन में नहीं है. इसके ऊपर बाय करेंगे तो ठीक है कि एटलीस्ट टाइम मिलेगा थोड़ा. So I think if we will buy it about 694, right? Either.
see if we need to modify the entry depending on Monday's opening. Target is 7150. Stop loss will be 6, 8. So, one बोलेगा ऐसे. Let's see, another from here, उत्तरी. ये नहीं बोलेगा ना इसको. There was a hammer here. Hammer high के ऊपर बाय था और फट कर ये लगा. हमारा बच्चा just come out with new bikes, so let's see क्या है उसका status. वही है अभी भी उधर का उधर ही अटका है. तो क्या shooting star बना रहा है. And there is an island reversal here. The buy is about this. It can take you back to the swing high. Again, there is a weekly pattern and it is at resistance. So above this only the buy is there. You can expect it to take you till another 4009, 4010 का level तक ये जा सकता है. Okay. बजाज पे 3795 का बाय है बजाज. नहीं, it is by 3795 नहीं है, 38 कल का जो हाई है उसके ऊपर पे बाय है. ओके. Scott seems like a buy about 1334 1335 के ऊपर में. Bandwalk for support. So Scott looks like a good buy about 1335, and you can expect it to take you till almost this level. But since I think lot size is bigger, I'm not giving this big. 1299 या the low of 1297 का stop loss भी है. And it is below 60. अगर ये 60 के ऊपर रहता था ना तो एक बार confidently दे भी सकता था. But ये क्रॉस करेगा तो 60 के ऊपर भी निकलेगा. That is for sure. But why take a risk? So Scott is also looking good actually. Because monthly is for 60 support. See this. Monthly is for 60 support. Doji at for 60. So I think equity में तो ले ही सकते हो ये. With this as your stop loss. 1290 as a stop loss. So equity में ये भी buy है actually. It looks good actually in Scott's. Let's go to. We saw. I wanted to see HDFC and HDFC Bank. So let's move to finance. की ना बेटा तूने फंसने वाली बात. कितना है ये 58 और 68 10 रुपया किसके ऊपर है.
So we might get a entry in our stock ideas equity stock में ये अभी and it's looking good. See, I am only looking. See, ये छोटा गैप भी उसको कितना लड़ता है, वो कितना इज्जत देता है. देखो ये इधर एक छोटा गैप है, वो 28.9 उधर ही उसने हाई मारा है. So this is looking good. So basically, I don't see any liquor related stocks. I'm really sorry. I don't see anything which is selling non-veg or liquor. So this is looking good. क्या करना, कौन सा स्टॉक देख रहा था वो नहीं भूल गया. HDFC. हाँ, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है. Actually, फ्लैग का टारगेट तो अभी भी है, but let's make this right now simple. जरूरत नहीं पड़ेगा. Got 5 stocks so far. See, there is a 3 bar PRD setup actually in HDFC. तो मेरे हिसाब से तो अभी जाना चाहिए बैंक निफ्टी भी. HDFC बैंक में क्या है वो भी देख लेते हैं. This bought yesterday. There is no PRD here, but it is okay. So about see इसको भी देखो, ये देखो इधर बड़ा सा गैप डाउन है ये, और यहाँ पे भी एक गैप डाउन है. So it has to cross 1625 और 26 लेवल. So 1630 के ऊपर में अगर ये जाता है तो ये भी अच्छा दिख रहा है. Cross 60 after a long time. अभी बैंक पे रेजिस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका. तो 1600 के ऊपर में वीकली भी रेजिस्टेंस है. So let's see now what it does. So now no bearishness because this and this candle is higher now. So let's see now what it does. वीकली काउंटर अटैक नहीं है ऐसा कुछ. सीधा RSI also no, and it is a bigger candle on weekly actually. So let me see. Now this is a doji at upper band resistance, and this is okay. But now let me see one thing. Yeah, 73, 71. So there is a bearishness in ICICI Bank, but monthly is okay clean. So we'll have to see that. HDFC Bank weekly counter attack. What's the counter attack? कहाँ counter attack है? It is not a counter attack. It's a bandwalk पे shooting star जैसा नहीं है. ये neutral candle है. इसमें body भी है तो बड़ा. So ये shooting star कम और neutral candle ज्यादा है. So where is there is no counter attack in this. There is no counter attack. Monthly पे देखा रहेगा तुमने, और monthly तो अभी चालू हुआ है ना. This is it. You saw it on monthly, but this is still making. Monthly तो अभी 3 दिन हुआ है, उसमें कहाँ हम पूरा कैंडल को इमेजिन कर सकते हैं. Right, and monthly there is a good setup. It's a flag setup actually. और ये पहला पोल भी आके खड़ा हो गया इधर.
So we'll have to now see if it is going above this. एक बार 2850 के ऊपर ये गैप को भी क्लोज करेगा तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, इसके लिए 2855 का मैंने टारगेट दिया। ये दोनों के बीच में ऊपर क्लोज करेगा, देन इट विल रश टू द 2905 वाला जो उसका दूसरा टारगेट है। There is nothing here. अरे बाबा तुम्ही कंफ्यूज हो नका आणि मला करा नका। मैं भी डर गया ना, काउंटर अटैक तो मैंने नहीं देखा था, वो मंथली था एक्चुअली, तो मंथली तो अभी 3 दिन है। ये क्या है, एक्सिस बैंक एकदम, ये देखो सीआईपी पे डोजी, अब करेगा क्या ये बेटा मालूम नहीं है, और गैप अप भी हुआ है, ये भी मंथली। सो सी दिस आल्सो रिस्पेक्टेड दिस छोटा सा गैप, सी दिस। सो ये एक बार भर दिया तो ये भी ऊपर निकल जाएगा। सो नाउ वी विल हैव टू सी दिस। सो दिस इज द प्री कोरोना स्टेट। प्री-कोरोना it was giving you this indication, भाई में गिरेगा, भाई में गिरेगा, फिर अच्छा गिरा हो। इसके लिए मेरे ख्याल से अपना एक्सिस बैंक में कौन है, निरंजन, औलक निरंजन को भी मैंने बोला था कि सिग्नल थे तो तभी ईसॉप बेच देना चाहिए था। इट्स अ वेरी क्लियरली शूटिंग स्टार एंड शूटिंग स्टार रीटेस्टेड। अरे नो सॉरी बाबा, इट इज जस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट see it with this thing, so milega, and it is good that you are seeing something, at least you recognize the candle properly, you know, that is the good part. It's always learning, there is no sorry in this. Sorry you say only if you lose money, even after learning, that is where you need to be really sorry. This is a breakout and now it is a doji above it on monthly, and see monthly 60 कितने दिनों के बाद, see after so many months this is cross 60 है एक्सिस बैंक। सो ये भी कुछ तो धमाल करेगा लग रहा है बच्चा। see this, सालों के बाद उम्मीद आई है इसमें, एक खुशी की लहर एक्सिस बैंक की तरफ। we need a high to be crossed ना 820, I think that is the new all time high also it has made, क्या ये all time high क्या उसके 830 है, okay. So banking is looking good actually. Let's see how much good it is. And finally, let me see तो SBI कोटक देख लो ना। ना, कोटक, आई थिंक कोटक इज डूइंग वेल। कोटक तो अच्छा ही है, हाँ अच्छा है। लॉट साइड इज आल्सो स्टेबल ना, 400 का ही है। हाँ 400 का ही है। Kotak also has a doji at 60. So only about this there is a buy. But it's a huge this thing, so you have 1820 है स्टॉप लॉस, आई थिंक 1795। नहीं 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 नहीं, उसका स्टॉप लॉस वो लो ऑफ द कैंडल होता है। So now we need a breakout of this actually. So maybe buy only about 1832. And it is still below 60 on monthly, so I will not go for Kotak yet. I will not go for Kotak yet. This is like it. Okay. So we have a doji at CIP and 60. Yeah, so buy about 1880. 1818 है, हाँ इसका हाई के ऊपर 1818 के ऊपर बाय करो। हाँ 18 से 20। हाँ लेकिन आपका स्टॉप लॉस और ये है, ये 1780 है। ओके, मैंने 95 लिया था, नहीं एक 95 क्लोज नहीं किया आता था। है, ये लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनफैक्ट आइडियली ये भी बन जाता है, ये जो लेवल है ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, वो हाँ ट्रेंड हाँ लाइन के नीचे, तो ये 82 है, तो इसके लिए मैंने 80 बोला। 80, ओके ओके। Okay, so now let's see. So बैंकिंग देखा, एक मिनट, हम लोगों ने कौन सा सेक्टर देख लिया, एफएमसीजी, सो निफ्टी डन, एफएमसीजी डन, बैंक निफ्टी डन, अभी आईटी एंड फार्मा हो जाए। चलो फटाफट पहले टीसीएस देखते हैं, बिकॉज टीसीएस में मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड कर दिया है,
So this is what I was intending it. See, there is a bearish divergence here, 3 bar. Okay, even 4 bar you can consider. Okay. And see, this was a very good PRD setup. I think Amar sir के साथ मेरा बात हुआ था. I told him that if only short if it closes below 3611. Okay, sorry 3711. क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा तभी आप शॉर्ट करना वरना मत करना. And otherwise there is a PRD setup and 3840 was the target जो उसने एक ही दिन में ये बड़ा कैंडल में दे दिया था. But now there is a bearish divergence, so you can short it with a target of almost this 3746. Okay, so there is one short trade here, but weekly does not have anything. Monthly also कुछ नहीं है. अरे क्या short करोगे इसमें क्या है? 7674. Okay, so there is still some hope of monthly, but weekly again there is nothing. Okay, so TCS, I think. Let me pick up the trade. What I had given yesterday only. Paper, yeah, stop. टीसीएस का पीआरडी बिल्कुल सही काम किया था. आप शॉर्ट में नहीं थे ना? नहीं वो तो 11 पर रखा था ना. हाँ, इसके लिए बच गया था. मैं एक्चुअली जब भी आप पूछते हो ना, मेरे को यही डाउट रहता है कि आप शॉर्ट भी खड़े रहोगे और आपको टारगेट चाहिए रहेगा. वो मैं बिल्कुल नीचे रखा था, बोला बहुत लॉन्ग वे नीचे जाना है. हाँ, एक्चुअली ये बराबर है. एक्चुअली मैंने कल जो दिया था वो गलत दे दिया था. सो नाउ 3846 का क्लोज है. Okay, and this is sell below. Let's play safe. वही 3811 पर रखा था मैं, आया नहीं. हाँ, अच्छा कल आपने रखा था क्या उसको शॉर्ट? नहीं, परसों रखा था देव. जिस दिन आपसे बात किया था 3811 रखा था. अच्छा, वहां तक नहीं गया था. हाँ, वहीं से ऊपर हो गया, पीआरडी से ऊपर भाग गया. पीआरडी से ऊपर भाग गया. राइट, आपने 3711 रखा रहेगा. हाँ 3711. हाँ, देखिए वही मैंने आपको लेवल दिया था ना, उसके नीचे आप शॉर्ट करोगे कि ये जो था ना उसके नीचे शॉर्ट करते थे तो ये आता भी नहीं था, तो पीआरडी सेटअप नहीं होता था. इसका टारगेट इज 3746, तो 3750 रखो. एकदम राउंड नंबर 3 रखेंगे. अरे एसीसी एलएनटी कुछ नहीं देखा हम लोग ने आज. इतना ट्रेड एसीसी में भी ये पीआरडी सेटअप है, बस हो गया. अभी इतना सारा ट्रेड एक दिन में क्या करेंगे? एक ही मंडे को ये सब ट्रिगर होगा तो टेंशन आ जाएगा. नहीं, हम एक दिन में नहीं करेंगे, वीक में करेंगे. हाँ, सब सेक्टर को बोलो एक एक करके ट्रिगर होने को. सर हाँ, सीमेंस का वीकली 4 बार बेरिश डाइवर्शन दिख रहा है और डेली में एम दिखता है, तो जस्ट एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा. हाँ, सीमेंस भी देखो. सीमेंस का मेन क्या है ना, वो बहुत वॉलेटाइल है. इसके लिए मेरे को डर लगता है उससे, क्योंकि वो ऊपर नीचे झुक जाता है. बट वो 40 पे अच्छा चलता है. सो आई थिंक इंट्राडे के लिए 40 सपोर्ट पे रहेगा ना, तो नहीं ये थोड़ा डाउन वाला लग रहा है. शॉर्ट के लिए लग रहा है सीमेंस का. हाँ, 60 रेजिस्टेंस पे और क्या, सिंपल. नहीं सीमेंस बोल रहा था मैं. हाँ, सीमेंस 60 रेजिस्टेंस 15 मिनट पे, तभी शॉर्ट करो. फिर भी एक बार देख लेंगे, नो रीजन है. अच्छा दिख रहा है सेटअप, अच्छा है इसका. आईटी में किधर भी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बेरिशनेस नहीं दिख रहा है. सो इट इज अ गुड साइन टू बाय स्टिल. आई थिंक वी बॉट. किसी को मैंने 3200 पे दिलवाया था टीसीएस. ही वाज लाइक शुड आई रियली बाय, ही इज नाउ चेरिशिंग दैट. माय ब्रदर, देखा था मॉनिटरी 4 बार बियरिश है वीकली में. किसमें है? सीमेंस में. हाँ, सीमेंस में ना. सीमेंस अभी मैं देखता हूँ इस. अरे इसमें भी एक बेरिश डाइवर्जेंस है. सो आई थिंक लेट्स सी आईटी सेक्टर क्या करता है. हम माइंट्री में भी डोजी और 60 मिनट्स में सर बेरिश डाइवर्जन है माइंट्री में 60 मिनट्स में. हाँ, लेकिन ये देखो मॉनिटरी. हाँ नहीं
माइंड ही नहीं बचा किसी का, ये क्या नहीं है? ये शॉर्ट के लिए बोल रहा था मैं। नहीं, इसको भी मतलब सी शॉर्ट करने के लिए भी कहाँ इसके नीचे शॉर्ट है, वो 3682 के नीचे। उसके पहले तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि उसके पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं होगा। सी बेरिश डाइवर्जेंस है ना, तो उसका कंफर्मेशन इज दिस लाइन, तो इसके नीचे आपका शॉर्ट बनता है। ओके, सो बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा सो, क्योंकि फिर ये टूटेगा तो बड़ा टूटेगा, जब तक नहीं टूटता तब तक नहीं टूटेगा ये। सो दैट्स व्हाई, एंड इवन द रिस्क विल बी दिस हाई, सो आई वुड अवॉइड इसके जाने से। यस यस या लेट्स सी सीमेंस। इसमें क्या है? अच्छा, देयर इज नो पीआरडी। इसका क्लोज क्या है? 78 और ये 76, नो पीआरडी, गुड इनफ। एम सेटअप है, यस एम है ना। एम है। द ओनली थिंग इज गैप सपोर्ट। ये देखो गैप सपोर्ट पे है वो, और वो सीआई भी है। ये इसमें दो चीज है। सी वन इज देयर इज bearishness, inbuilt bearishness also, and other thing is see this where the bearish candle is. ओके, तो जो हम लोग आई थिंक P1 जिस जिसने किया है फॉर देम आल्सो, आई कीप सेइंग इट राइट, बेरिश कैंडल एट सपोर्ट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, बट द सेटअप लुक्स गुड, इट इज अ वेरी गुड सेटअप। ओके, सो इसके नीचे शॉर्ट है, बट सी देयर इज सो मेनी गैप, तो इसका टारगेट ना डायरेक्टली, नॉर्मली द टारगेट इज दिस 20 mm, ओके, और उसके नीचे में इट माइट गो डाउन टिल दिस लेवल 2150, बट बहुत सारा गैप अप हुआ है ये। मैंने लिया था 2255 एंड टारगेट इज 2230 मुझे इनफैक्ट 20-25 पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन ये वही इंट्राडे देखना पड़ेगा, बिकॉज सी लुक एट दिस इज टू मच। या ये इसमें रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ हाँ, 4 बार है, हाँ, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ 4 yes. बार है। 73, but again immediately there is a gap support even on 2234, monthly भी है एक्चुअली इसमें तो 76 and 75 मंथली भी है, तो 2255 के नीचे शॉर्ट है ये एक्चुअली, राइट then immediately there is a gap support till 234। अरे बाप रे, 226 से लेके वापस आने छोड़ दो ये इंट्राडे पे आई थिंक यू कैन सी एंड ट्रेड दिस, बाकी ये बहुत डेंजरस है। हाँ नहीं इंट्राडे के लिए भी बोल रहा था मुझे, मंडे पॉइंट है, मंडे ट्यूसडे मैक्स। वो 15 मिनट का ही देख के फिर करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ओके ये क्या हो गया? Let's see, this is what flags can do, by the way. See this was where it was, and it has already given 60% के ऊपर का reward. अरे बेटा, कॉपी होने में इतना टाइम कैसे लगा? See 60% के ऊपर तक का तो आ गया, इसका टारगेट 1500 है। It's already given that target. मंथली और भी बड़ा है, 600 पॉइंट है, बट स्टिल लुकिंग गुड मतलब, and there is no bearishness now I think। ये क्या है 75 और ये 77 छोड़ दो। So this whole thing, consumer products have actually done good। Pidilite is at support। See, I think yesterday Saraf sir ने ही भेजा था ये, it's at CIP and there is a breakout on weekly, but there is bearish divergence as well। Monthly नहीं है, daily नहीं है, so this is looking good। Let's see BRR। BRR is approaching bandwalk, so maybe upper band and 60 resistance, so some retracement time you can expect now। Let's see island reversal and swing high, target is achieved ना actually island reversal का। अगर कल कैप डाउन होता है तो वापस ही नीचे पे लेके आएंगे इसको।
So bounced on this. Okay, so first maybe bearish range shift. So we'll have to see whether it crosses 60 or not. So nothing can be done here. Davies lab. Why only about this now? There is a bearish divergence. नहीं ये क्योंकि close भी नीचे RSI भी नीचे. तो संभल के खेला भाई सब ने एकदम. These are looking good. So Davies lab is looking good, I think. Saraf sir, you're still holding या you sold? आपका stop loss hit हुआ रहेगा ना, I think. भेजा था मैंने. Booked perfect. So the top bottom, I think it would have hit his TSL. अच्छा, holding still. So then I think this low 51.55 is your stop loss है actually अभी. ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल देना मंडे को. बाकी इट इज लुकिंग एज अ फ्लैग सेटअप एज वेल. खाली वॉल्यूम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इसमें भी बढ़ गया. ये डोजी में अगर लास्ट कैंडल में वॉल्यूम नहीं रहता था ना, इट वाज एन आइडल फ्लैग सिचुएशन, देन इट वुड हैव गिवन यू मोर, यू नो, ऑलमोस्ट 5500 का टारगेट है इसका फिर. So if you are holding, it is okay, but I will not give any entry here. Let's go to then ACC. You know the type for ACC is only type. So ACC is also looking good. It is at CIP and a white candle. See, this you cannot consider as a bearish divergence, okay, because this is outside, this is also outside. Second thing is this is the top candle, and this is inside and this is outside. Okay, so Bollinger Band के हिसाब से भी no volatility divergence. RSI, yes, there is divergence, but then the number of bars are too many. Okay, so you can ignore this type of setups. It's not a bearish setup actually. Looks good to me. यहाँ पे है. See, this is perfect outside inside. I was thinking of a buy on it, but I would looking at the weekly will wait. Looks good actually. इसके ऊपर में buy होना चाहिए. Is looking good. It's an all-time high, and look at this. Breakout on the new all-time high. Now it can give you again the same, I think. सराव सर, ये टॉप बॉटम में आपने पकड़ के रखा रहेगा तो पकड़ के रखो. खाली ये टूटेगा तो निकल जाए. But otherwise, see, this is what you are now getting it. This is looking good. So top bottom करो ये सब चीज पे जो trended है ना, it gives you good money actually. Here also I think there was bearishness. नहीं है, नहीं है. तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. So this is looking more better, I think. Let's leave this. It's looking good actually. Seven nine three seven. So 79380 डालता हूँ.
And last, let's see LNT. यार कर क्या रहे ये लोग? Four-bar bearish divergence at all-time high actually. But see, weekly bearish divergence उसको confirm होने के लिए trend line टूटना पड़ेगा उसका. तो ये trend line तो काफी strong है, इसको कौन तोड़ेगा बताओ मेरे. So short is only below this. 100 पॉइंट के नीचे आने के बाद शॉर्ट है वो. शॉर्ट फिर इधर है. कंफर्म होएगा कि नहीं होएगा नेक्स्ट वीक में वो देखना है. तो ठीक है, लेट्स सी. जाने दो इसको भी. ओके, सो स्टिल लुकिंग गुड. 7875 बजाज फाइनेंस. So Bajaj Finance, okay. Bajaj Finance, let me see Bajaj Finance for you, South Africa. Bajaj Finance, it is looking okay. Yeah, you can hold it. This is your stop loss. अच्छा जा रहा है, जाना दो. See, there is no bearishness yet in the market in the key stocks, by the way. इसके लिए मैं अभी भी निफ्टी ऊपर ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ. So there is no bearishness in Nifty nor in any sectors yet on a high time frames. So that's why the markets are still looking good and still robust. Okay, I think किसी ने मेरे को एक इक्विटी का स्टॉक पूछा था, वो एक बार देख लेता हूँ. Okay, then we can end today. क्या था वो? कुछ MR टेक या क्या था? आलोक, you put something. What was that? एंटर टेक. ये क्या चीज है? कहाँ से लेके आया भाई? Dark or tech. Hopefully it is in traded in NSE. Dark tech. Dark tech is a name. अरे बाप. Now is approaching the gap. So this is approaching the gap now. I will not consider this as a buy right now. अरे बाप रे, तो weekly भी बड़ा gap है, जाने दो. There's no gap on this, but I think unless and until it closes this gap, the upside movement is clamped. Okay, so and it has got a bearish range shift as well here. So let's see what it does. जब तक इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं कर सकता. वही है मेरे ख्याल से इधर भी 78. So above 80 only, 1380 only you can take it. Okay. Okay, I think that's it. Anything else? Let me know. Okay, so मारुति का जो रिकॉल है उसका कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा सर. तो Sir, it is looking as a, see that is already been discounted in the price because that recall का consideration जब भी चालू किया रहेगा हम लोग ने discussion, तभी price इतना गिरा रहेगा. Now I think it is already done and dusted and it is left behind. And I think there is a very strong statement from its CEO saying that electric cars we will not start unless there is more subsidies given, and also he is expecting some subsidiaries to come in CNG as well. So उन लोग का वो काफी bold statements है. जबकि Tata Motors, I think if you are holding in equity, I would still prefer enter into it because they are coming out with more and more electric cars. that I am holding Tata Motors cash में holding. That I am also holding. So my view is more positive in it, and once it crosses 310, we'll see the movement going again. My price levels are around 450, 500 soon. So let's see, 2-3 months we should be having it coming up till this level. यहाँ पे उसको फिर थोड़ा दिक्कत होगा, but ये level तक आ जाएगा ये. And I'm looking at like जहाँ पे मेरा क्लब है उसके बाजू में ही टाटा मोटर्स का वर्कशॉप है.
And the cars that are coming there every day, so this is a beautiful trend line breakdown and is going on. So business wise, they're doing good, and I think Jaguar ke losses now are nullified. So they should now start making profit from that. So let's see, A level cross करने पे I think it should do some magic for us. Okay, so then that's it, and this is the summary. I'll upload it on YouTube as well. And there is simply build house training. I've kept it actually 2 दिन रखा है मैंने 12th September because I know Ganpati के लिए many people will be having that 2 days Ganpati, and also 19th 18th September I've kept because 19th is the final day for Ganpati. So I'll just that festive season ना बिगड़े इसलिए 2 दिन रखा है. So if anybody is looking forward for it, let me know. And I'm also thinking that I might move it to 25th of September so that I avoid that clash, and because I know 2 days Ganpati are very much in many people's place because that is where it is, and I think Abhibi Visarjan it is restriction. So we'll see, even if you have anyone for 12th, 18th or 25th, we can still do it. 26th is a very big day for me as well. So 26th is a Sunday and I will be not there. Okay, so 26th is my guru's birthday. So I will be not available at all. Okay, so I'll be there full day there. Okay, but for me, 12th, 18th and 25th are workable, and we can have that training on either of these days depending on whether we get at least 4 to 5 people on each of the days, right? So thank you once again and see you again next week.